Assalamu alaikum. I am Dr. Rahman Almi, and today our topic is solutions, introduction, and types of solutions. Solutions are basically the most importantly used mixtures, or most commonly used mixtures that are used in pharmacy and chemistry fields, in approximately in every processing, in every mixture formation, and in every dosage form preparations, in preparation of any chemical, in preparation of any medicine. Solutions are most widely used, and therefore their introduction and types are much important. We must know about their types and their introduction. Being a pharmacist, being a chemist, we must know about their types and their introduction. First of all, in our today's lecture, we will discuss about the different types of mixtures and what are mixtures, then the solutions and their types. As solution, one of the major type of mixtures. Therefore, before solution, we will discuss a little bit about the mixtures, and then the solutions and types, and then the unsaturated, saturated, and supersaturated solutions, which are the different types of solutions, and then we will discuss about the ideal versus real solutions, and or non-ideal solutions, and most importantly the Raoult's law. We will try to discuss the important topics both in English and Urdu, in both languages, so that everyone can understand easily, inshallah. What are the mixtures? Mixtures are basically the combination of two or more substances. When you mix two or more substances without their chemical interaction, मतलब जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करते हैं बगैर उनके chemical रिएक्शन किए बगैर, जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करते हैं उनको हम मिक्सचर्स कहते हैं. When you mix two or more substances without their chemical reaction, without causing chemical reaction, when you physically only mix them, that is known as mixtures. There are two types of mixtures basically. Mixtures can be any type of mixture of substances. For example, like the guy over here is making a chocolate by mixing different things, so this is also a mixture. The drugs mixed with water is also a mixture, and the salt mixed with water is also a mixture. Any combination of two or more substances that are not reacted chemically, जिनको हम chemically react नहीं करवाते हैं, उनको हम mixtures कहते हैं. They will be called as mixtures. And there are two basic types of mixtures based on their composition: the heterogeneous mixtures and homogeneous mixtures. The heterogeneous mixtures, as the name indicates, hetero means different and mixture means mixture. So these mixtures will have different substances or phases. The substances or phases will be different in these mixtures, like solids, gas, liquid. There will be different types of different phases of substances will be used, and they can be easily separated out by filtration. For example, when we mix any solid particle with the liquid, so we can easily separate them by simply filtering out the substances. For example, the suspensions and emulsions. Suspensions basically वो formulations होते हैं, वो mixtures होते हैं जिसमें हम किसी भी solid particle को suspend करते हैं liquid के दरमियान, उसको हम suspensions कहते हैं. And the emulsions, where the globulets, the oil globules or the oil sphericals are immersed in the liquid, that is known as emulsions. And we can easily separate the solids and liquids in suspensions, and the globules and liquids in emulsions. Therefore, they are known as heterogeneous mixtures that can be easily filtered, that can be easily separated by filtering, by filter membrane or filtering them. Second types are homogeneous mixtures, where the homo means same. Here, a uniform, the final composition or the final mixture will have a uniform composition, will have a uniform appearance. There will be no, for example, जिस तरह के mixtures suspensions होते हैं उसमें particles नजर आ रहे होते हैं, इनमें कोई particles नजर नहीं आएंगे. Uniform appearance होगी. They will have uniform appearance. And most importantly, they are the most common type of mixtures are known as solutions, and the heterogeneous mixtures were suspensions and emulsions. And the most common solution is salt in water solution, like you can see here in the diagram. The salt dissolved in water is the example of solutions, and solutions come under the examples of homogeneous mixtures.
Now coming towards the solutions, what are solutions? Solutions are basically the mixtures of two or more substances that is identical throughout or homogeneous. ये किसी भी दो या दो से ज़्यादा substances के का mixture है जिनका जो कि identical जो कि एक जैसे होंगे या homogeneous होंगे या most common in other words we can also define it like homogeneous mixtures of one or more solutes dissolved in a solvent. जब हम एक या एक से ज़्यादा solutes सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उस मिक्सचर को हम लोग या उस होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशंस कहेंगे they can be easily physically separated by different tools and the main composition of these solutions are solutes and solvents. Solute means a substance being dissolved, for example iced tea mix or sodium chloride, salt, or for example sugar that you dissolve in water. So these are solutes are those substances which are dissolved. That substances are called as solutes. While solvents are the substances in which the solute is dissolved. Solute वो substance है जिसको हम dissolve करते हैं. जिस तरह के नमक को आप पानी में dissolve करते हैं तो नमक जो है वो solute है जो आप dissolve करते हैं. और जो पानी है जिसके अंदर आप solute को dissolve करते हैं पानी या एसीटोन या फॉर एग्जांपल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या इथानॉल जो भी सॉल्वेंट होगा जो भी लिक्विड होगा जिसके अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे उस लिक्विड को हम लोग सॉल्वेंट कहा जाता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट so a solution is composed of two components solutes and solvents and when we mix both of them a solution will be formed and the solutions can be physically separated by different methods like chromatography and other methods but they cannot be separated by simply filtering the solutions जिस तरह के सस्पेंशन हम लोग फिल्टर मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशंस हम लोग फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं here you can easily understand the solutions as solution is made up of dissolving solute in this solvent. This is for example a solute when we put it in water it will be dissolved like you can see here in the water as it dissolves into smaller particles it converts into smaller size and dissolves inside the water and a solution will be formed. When a solute is dissolved in water then a solution will be formed. That mixture will be called as solution. So there are two major parts of solutions. One is the solvent and one is the solute. In most of the cases, solvent is in larger amount and solute is in a lesser amount. But this may not be always the case. Their concentration may change depending upon the type of solution. But solvent are those solvent वो part हैं जिसके अंदर हम solute को dissolve करते हैं. ये बहुत ज़्यादा important point है. The types of solutions on basis of states of materials used we classify solutions into 9 types. For example, solid in liquid in solid like alloys. For example, solid जिस alloys means जिस तरह के for example जब for example glass के कप जब बनते हैं तो ये इन गिलास को हाई टेम्परेचर दिया जाता है 2000-3000 तक टेम्परेचर दिया जाता है वो उस गिलास को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर उसके अंदर और इसी तरह के पार्टिकल्स डाले जाते हैं केमिकल मिक्स कर दिए जाते हैं फिर उनको जब कूल करते हैं उसको गिलास को जब कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है सो इट मींस अ सॉलिड इन सॉलिड दैट इज known as that is also a type of solutions. इसी तरह solid in liquid like sugar solution, sodium chloride solution, as we have made in the lab the sodium hydroxide solution that is a type of solid in liquid solution. इसी तरह solid in gas solution जिस तरह के aerosols the dosage form the inhalational dosage forms which are used to treat asthma or other lungs related diseases or breathing related diseases जिस तरह के asthma वगैरह के disease के लिए जो machines use होते हैं या जो inhalations use होते हैं they are basically solid in gas or aerosols form में होते हैं वो इस तरह liquid in solid like dental amalgams and liquid in liquid like ethanol and in water ethanol और water को जब हम mix करेंगे तो वो एक liquid in liquid है इसी तरह liquid in gas like water in the air vapors in the air or water in the air हवा में जिस तरह के पानी होती है उस वो liquid in gas solution है सर gas in solid can be like hydrogen and palladium and gas in liquid can be possible like water in air and सोडा वाटर जिस तरह गैस जो है वो वाटर के अंदर होता है सोडा वाटर में
and gas can be like atmospheric, like in the atmosphere there are different gases are mixed. So these are the different types of solutions based on their phases. जैसे कि मतलब phase की base पे 9 types of solutions are the gaseous solutions, liquid solutions, and solid solutions. Gaseous solutions are mostly and most common example is the air, like oxygen plus nitrogen, and the liquid solutions are most commonly like the drinks, the different mixtures like the ethanol plus water, alcohol plus water, or any other mixture. And the solid solutions are alloys, for example, steel or glass or etc. Now, before forwarding onward, what is concentration? This is very important. कि concentration क्या है? Concentration means amount of solute dissolved in solvent at a given temperature is concentration. आप किसी भी solute को किसी भी solvent में dissolve करते हैं एक खास temperature पे, उसको हम लोग concentration कहते हैं कि for example 1% है या 1 normal है या 1 molar है, उसको हम concentration कहते हैं. A solution can be dilute और concentrated. Dilute means कि जिसके अंदर solute की amount कम होगी, उन solutions को हम लोग dilute solutions कहते हैं. जिनके अंदर solute की amount ज़्यादा होगी, उनको हम लोग concentrated solutions कहते हैं. जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर solute की जो amount है वो काफ़ी ज़्यादा है. इनको हम they are called as concentrated solutions, whereas those solutions where the solute amount is in less amount, when solid is present in less amounts, that solution is called as dilute solutions, जिसके अंदर solute कम amount में होगी. And depending upon the based on the concentrations, the solutions can be unsaturated, saturated, and supersaturated solutions. First of all, moving towards the unsaturated solutions, like the here you can see in the unsaturated solution, a small amount of solute is dissolved in solvent. जब solvent के अंदर हम लोग एक small amount of solute को dissolve करते हैं एक खास temperature पे, एक specific temperature पे, उसको हम लोग unsaturated solution कहा जाता है. इस दौरान अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में उस सॉल्यूशन में उसी नॉर्मल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उस पे उनके अंदर और भी पॉसिबिलिटी हैं चीजें डिसॉल्व होने की. देयर विल बी मोर पॉसिबिलिटी इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अनसैचुरेशन फेज. मतलब इसमें जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस है ये वो सॉल्यूशंस है जिसमें एक खास टेम्परेचर पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट पे. इस कंडीशन में ये होता है कि उस सॉल्वेंट के अंदर और भी डिसॉल्व होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब और भी सोडियम क्लोराइड या कोई और सॉल्वेंट इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता होगा. और यहाँ पर इनकी निशानी ये होगी कि देयर विल हमें कोई सॉलिड पार्टिकल जो है वो फ्लास्क के अंदर नजर नहीं आ रहा होगा. This is the main sign for unsaturated solution, that there will be no solid remains in the flask. Now these saturated solutions, these are those solutions when we dissolve more solute at a specific temperature. उस खास टेम्परेचर पे जब हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं उस वक्त तक डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक कि उसमें जिसके बाद उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी डिसॉल्व होने की उस नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको फिर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं. These saturated solutions are those solutions where we dissolve much solute as possible at a specific temperature in the solvent. That solution will be called as saturated solutions. कि जब आप एक specific temperature पे जितने ज़्यादा हो सकते हैं इतना ही solute आप dissolve कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता उस टेम्परेचर पे. और ज़्यादा डिजॉल्व करने के फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा. उस सॉल्यूशन को फिर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं. और ये हमें नज़र इस तरह से आएगा कि यहाँ पर जब हम चीज़ें डिजॉल्व करने लगेंगे तो एंड पे ये होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो जो डिजॉल्व नहीं होंगे एंड पे जो कि सैचुरेटेड हुआ होगा, सैचुरेशन या सैचुरेटेड पॉइंट पहुंच गया होगा, उसके बाद जो पार्टिकल जब वो हमें सॉलिड के फॉर्म में नजर आ रहे होंगे बीकर के अंदर वो डिजॉल्व नहीं होंगे फिर. The sign of this saturated solution is that the solid particle can be seen as a solid particle or as a particle inside the beaker or inside the solutions. That is the sign that the solution has reached its saturation point. As you can see here as the example, for example, if we dissolve sodium chloride in water, if we dissolve 30 gram sodium chloride in 100 ml of water, so all of the sodium chloride will be dissolved. As you can see here,
no solid particles can be seen, and this solution will be called as unsaturated solution, because at this point there is possibility of more सोडियम क्लोराइड टू बी डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पर अगर आप देखें 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जब 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया है, तो यहाँ पर इस बीकर में अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड के कोई भी हमें पार्टिकल नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सारा का सारा सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो चुका होगा यहाँ पर। और इस सोल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर और पॉसिबिलिटी है उस नॉर्मल टेम्परेचर पे डिजॉल्व होने की। जब हम लोग इसी तरह जब और सोडियम क्लोराइड हम ऐड करते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 ग्राम पहले डाला था, उसमें जब हम 10 ग्राम और ऐड करेंगे जो कि 40 ग्राम होगा, तो इसमें जब हम ये 100 ml वाटर के साथ मिक्स करेंगे और डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बाकी तो सारा डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन 4 ग्राम या 5 ग्राम या 6 ग्राम हमें विजुअली नजर आ रहा होगा जो कि डिजोल्व नहीं हुआ होगा। जो 4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो डिजोल्व नहीं हुआ होगा, और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि उनकी जो वाटर की जो सैचुरेशन पॉइंट है 100 ml वाटर की वो पहुंच गई है, उससे ज्यादा वो इसी नॉर्मल टेम्परेचर पे डिजोल्व नहीं कर सकता, और इसको फिर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Then the next one will be the supersaturated solutions. These are basically the solutions when, like here you can see in this saturated solution, solid particles can be seen or extra solute can be seen. But when we heat them, when we give a high temperature to them, all these extra solutes will be dissolved, and that solution will be called as supersaturated solution. Supersaturated solutions वो होते हैं कि जब saturation के बाद जो solid particles रह जाते हैं जो कि normal temperature पे dissolve नहीं होंगे, तो जब हम heating देंगे उनको और heat के जरिए से जब उनको हम dissolve करवाएंगे उस solvent के अंदर या उस solution के अंदर, तो उस solution को फिर after heating उस solution को फिर हम लोग supersaturated solution कहेंगे। उस solution को क्या कहेंगे? supersaturated solution कहेंगे, जिसमें हम heat देके चीजें dissolve करवाएंगे। और इसकी निशानी फिर इस तरह से होगी कि जब सुपर सैचुरेशन पॉइंट जब पहुंच जाएगा, तो इसकी मेजर निशानी फिर ये होगी कि चीजें जो है वो क्रिस्टल्स के शक्ल में यहाँ पर हमें नजर आ रहे होंगे। क्रिस्टल्स, उनका शक्ल चेंज हो जाएगा, वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे यहाँ पर, जो हम ज्यादा हीट देंगे और ज्यादा चीजें जब डिजोल्व करवाएंगे, जो कि उस पॉइंट तक हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशंस वो हैं जिसके अंदर आप मोर सॉल्यूट्स वहाँ पे डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी है उस नॉर्मल टेम्परेचर पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है कि जहाँ पर कोई भी और सॉल्यूट डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी नहीं है उस नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि ऊपर से हम डाल रहे हैं लेकिन नीचे वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है यहाँ पे डिजोल्व होने की। लेकिन जब हम इसी सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वो उसी को भी डिजोल्व करेगा, उसमें जब हम और डालेंगे कुछ हद तक तो उनको भी वो डिजोल्व कर देगा हीट की वजह से। और फिर एक पॉइंट आएगा कि उनको वो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो क्रिस्टल्स के शक्ल में चेंज हो जाएंगे, क्रिस्टल्स के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, जिसको हम लोग, और इस सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, while in the saturated solution no more solute can be dissolved, and a solid particles can be seen inside below the or inside the beaker or the test tube. But when we give heat or we increase the temperature, all these solid particles will be dissolved, and if we try to dissolve more solutes, so they can make different crystal shaped particles, or crystal shapes can be formed, which will be called as supersaturated solutions. Now the Raoult's law is the most important law utilized in solutions. Raoult's law के मुताबिक ये है कि सिंपल अल्फाज में ये कि Raoult's law ये कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, वो उस सॉल्यूशन के जो प्योर कंपोनेंट्स हैं उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर है। पहली बात है कि पार्शियल प्रेशर है क्या? पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है या वेपर प्रेशर जो है, ये वो पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है कि जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर जो है या वेपर्स जो है वो ज्यादा होंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वो ज्यादा वोलेटाइल होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स। जितना वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतने ही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो उतने ही इसके मुताबिक इंक्रीज होंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो इतने ही ज्यादा होंगे उस मॉलिक्यूल के। तो रॉड्स ला ये कहते हैं कि जो कोई भी सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो उनके अंदर जो उस सॉल्यूशन के
पार्शियल प्रेशर है या उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल है उसके इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर है वो। हालांकि हर जगह पे इस तरह नहीं हो सकता, जब हम लोग चीजें मिक्स करते हैं तो उनके पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कुछ और आएगा, वो एग्जैक्ट वही नहीं हो सकता हमारे पास। जिस तरह आप किसी भी फॉर एग्जाम्पल आप दरवाजा जब आप तोड़ेंगे तो उनको वही शक्ल नहीं रहेगा जिस तरह की होना चाहिए था। इसी तरह से रोड्स लॉ भी, रोड्स लॉ के अंदर पार्शियल प्रेशर भी है कि जब हम चीजें मिक्स करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उनका जो जो वाटर और सोडियम क्लोराइड का जो अलग अलग प्रेशर था वो जरूरी नहीं कि वो सेम आ जाए, एस कि वो सॉल्यूशन के बराबर ही आ जाए उनका पार्शियल प्रेशर, लेकिन रोड्स लॉ ये कहते हैं कि वो सेम होगा, तभी वो रोड्स लॉ के मुताबिक होगा। और इसी बेसिस पे हम लोग करते हैं कि एक हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस हैं और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो हैं जो रोड्स लॉ को फॉलो करते हैं। रोड्स लॉ क्या कहता था कि वो उसमें वेपर प्रेशर या जो इंटरेक्शंस थे वो सॉल्यूशन के जो इंटरेक्शंस थे वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बराबर थे। रोड्स लॉ ये कहा कहता था। लेकिन जो रियल जो हकीकतन में जो सॉल्यूशंस होते हैं या जो रियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रोड्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और ज्यादातर जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर रियल इन नेचर और नॉन आइडियल इन नेचर। इस कैटेगरी में ज्यादातर सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं वो ज्यादातर इस कैटेगरी में आते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस है जिनकी यूनिफॉर्म अट्रैक्शन फोर्सेस जाहिर सी बात है जब रोड्स लॉ फॉलो करेंगे तो उनकी जो फॉर एग्जांपल ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट एंड वाई फॉर इंटरेक्शन, तो उनकी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस होंगे वो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मतलब जो दो पार्टिकल्स हैं वाटर के उन दोनों के जो इंटरेक्शंस है और उस वाटर की जो सॉल्यूट या सोडियम क्लोराइड के साथ जो इंटरेक्शंस है रोड्स लॉ या आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जो जिसमें ये सारे इंटरेक्शंस इक्वल होंगे। लेकिन इस तरह नहीं होते हैं जिस तरह रियल सॉल्यूशन में है कि ये इंटरेक्शंस डिफरेंट होंगे। जो एंटीजन और सॉरी जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शंस हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से कम कम ज्यादा भी हो सकते हैं और वो कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो बराबर हो। और इसी क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें इक्वल है तो इसी वजह से जो वॉल्यूम चेंज है उसके चांसेस भी नहीं होंगे। जो जितने सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो होगा, जितने सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि मॉलिक्यूल जब हम मिक्स करते हैं या हीटिंग देते हैं तो वो इवेपोरेट भी करते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन उसकी अमाउंट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है वो अमाउंट जिस तरह के रियल सॉल्यूशन में है। सेकेंड फिर है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है या चेंज इन हीट है वो आइडियल सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। हालांकि होता है चेंज, कोई भी सॉल्यूशन जब आप उसका टेम्परेचर अगर आप चेंज करना चाहें तो उनका टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर जो है वो होने के चांसेस हैं उनके अंदर। तो जो रियल सॉल्यूशन है ये वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में टेम्परेचर चेंज होने के चांसेस नहीं है। This was all about the solutions. Thank you so much.